बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज मुबशिर रियाज। हम लोग चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर थ्रू रेजिस्टर एंड थ्रू कैपेसिटर डिस्कस किया जा चुका है। In case of resistor, voltage and current they are in phase, but in case of capacitor, current leads the voltage by a phase difference equal to pi by 2. Now it's a turn to discuss the behavior of alternating current through an inductor. So when alternating current passes through an inductor, so how it behaves, ये आज का हमारा टॉपिक है कि इसमें हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर थ्रू एन इंडक्टर डिस्कस करना है, जबकि इससे पहले रेजिस्टर और कैपेसिटर में ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर स्टडी किया जा चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय एन इंडक्टर? An inductor is a coil or a solenoid wound from a thick wire having large value of self-inductance and negligible resistance. This is called an inductor. It is just like a coil or a solenoid having thick wire. So due to thick wire, it has negligible resistance, but it has a large value of self-inductance. इसकी self-inductance की value greater होगी, resistance इसकी negligible होगी. So this coil or a solenoid is known as an inductor. So this inductor is a two-way terminal electrical component. यानी इसके दो terminals हैं, and this electrical component can store energy in magnetic field when current flows through it. For example, this is an inductor. So when current passes through this inductor, a magnetic field is produced around it, and this electrical component, which is known as inductor, can store energy in its magnetic field. ये अपनी ही magnetic field में energy को store कर सकता है। अब यहाँ इस topic में हमें ये देखना है कि relation between voltage and current क्या होगा, how it behaves. So for this purpose, let me consider an arrangement, and this arrangement consists of an inductor having inductance L, and it is connected with an AC source whose period is represented by capital T as shown in fig. So this is an electrical circuit, and this is the symbol of an inductor having inductance L. So VL is the voltage drop across this inductor, VL, and V is the applied voltage. So this inductor, whose inductance is L, connected with an AC source. Now, the value of alternating current passing through this circuit at any instant of time can be written as I, which is equal to I naught sine omega t, where I is instantaneous value of alternating current that is passing through the electric circuit, and I naught is the peak value of current, whereas omega t is known as phase. So with the help of this equation, we can draw the waveform of this alternating current with respect to time. So this is the sinusoidal waveform or trace of this alternating current. ये उसकी waveform होगी जो current की जो इस electric circuit में से pass हो रहा है. Now, when alternating current passes through the coil, आप जानते हैं कि alternating current is a type of current whose direction changes with respect to time. कि ये एक ऐसा current होता है जिसकी direction time के साथ change होती है. So when this type of current passes through this inductor coil, then an EMF induces in the coil. क्योंकि flux में change आएगी, and due to change in flux, EMF will induce in the coil, and this EMF is called self-induced EMF, or it is also called back EMF. यानी उसी coil के अंदर EMF induce होगी जिसमें करंट चेंज हो रहा है. यहाँ करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है. So that's why flux changes through the coil and EMF is induced in it. This self-induced EMF is equal to L delta I over delta T, and this self-induced EMF depends upon the rate of change of current in the same coil. Whereas
L is self-inductance. Here L is self-inductance. To maintain the current in the electric circuit, applied voltage must be equal in magnitude but opposite in direction to the back EMF. कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. Applied voltage must be equal in magnitude but opposite in direction to the applied voltage or back EMF. Hence V is equal to L delta I over delta T. यानी हम यहाँ EL को V के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि they must be equal to each other. So they must have same value. Since V is equal to L delta I over delta T. Hence, the value of alternating voltage can be determined by measuring the slope of IT curve, where I is the amount of current and T is the time taken. तो अगर आप इस वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, इस V की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को डिस्कस करना है. यानी हमें करंट और टाइम की ये जो कर्व है, ये जो इसकी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, हमें इस ग्राफ की स्लोप को फाइंड करना होगा और स्लोप की जो वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बिकॉज वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस. और यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी है दैट इज करंट और एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी है वो टाइम है. और अभी हमने जो प्रीवियस इक्वेशन में देखा कि v is proportional to delta I over delta t. So by measuring the slope of IT curve, we can determine the value of v. For this purpose, let me have different points A, B, C, D and E. These are different points on the current time curve. आपने इन डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी स्लोप को मेजर करना है. एट पॉइंट ए व्हेन टी इज इक्वल टू 0. ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं इन केस ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर. सो एट पॉइंट ए व्हेन टी इज इक्वल टू 0, स्लोप इज मैक्सिमम. Hence we can say that value of alternating voltage at this point is also maximum, which can be represented with the help of this diagram. आप point A पर slope को find करने के लिए tangent draw करेंगे. So this is tangent at point A. So with the help of this tangent, we can measure the change in y-axis and then change in x-axis. और यहाँ आप नोट करेंगे कि there is a large change along y-axis as compared to small change along x-axis. कि y-axis के along x-axis की निस्बत ज्यादा change है, लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि at point A slope is maximum. And if we compare the slope at point A with another point, आप यहाँ इनको कंपेयर करके नोट करें कि यहाँ अब y एक्सिस के लॉन्ग चेंज कम हो चुकी है जबकि x एक्सिस के लॉन्ग चेंज बढ़ चुकी है. और जब x एक्सिस के लॉन्ग चेंज बढ़ रही है और y एक्सिस के लॉन्ग चेंज कम हो रही है तो इसका मतलब है कि स्लोप डिक्रीज हुई है. So while moving from A to this point, up to this point, the slope of this curve is decreasing. Hence we can say that at point A there is maximum slope. So value of V alternating voltage at point A is also maximum. Now there is another point which is B, when T is equal to T by 4. At this point slope is minimum. And how it is minimum? आप यहाँ point B पर ये tangent draw करते हो, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर आप नोट करेंगे देयर इज नो चेंज अलोंग वाई एक्सिस. सिंस देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप इज मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0. सो वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज आल्सो मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0. सो एट पॉइंट ए देयर इज मैक्सिमम स्लोप, बट एट पॉइंट बी देयर इज minimum or 0 value of alternating voltage. Now, the third point, which is point C, when T is equal to capital T by 2. At this point,
स्लोप इज मैक्सिमम बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये याद रखना है कि इस पॉइंट सी पर स्लोप मैक्सिमम तो होगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है, और इसको प्रूव कर सकते हैं आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके। यहां आप नोट करेंगे कि अगेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन वाई एक्सिस with respect to small change in x एक्सिस। तो जब आप इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम तो होगी बट इन reverse direction. So we can say that alternating voltage at point C becomes maximum but in reverse direction. लिहाजा point C पर वोल्टेज मैक्सिमम तो है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। इसी तरह point D when t is equal to 3t/4, again there is no change along y-axis. यहां फिर y-axis के along change 0 है. So if there is no change in y-axis, then slope becomes minimum, that is equal to 0. So voltage at point D again reduces to 0. At the last point, which is E, when t is equal to capital T, again slope is maximum, hence voltage is maximum as shown in fig. So at point E, again, there is a large change in y-axis as compared to small change in x-axis. So point E has maximum slope. That's why value of alternating voltage at point E becomes maximum. तो ये वो तमाम points A, B, C, D और E थे जहां पर आपने स्लोप को फाइंड किया, और आप नोट कर रहे हैं कि इन तमाम पॉइंट्स पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Finally, we can say that there is a curve named PQRST for alternating voltage is obtained. ठीक है, तो फाइनली जब आप इन तमाम वैल्यूज को कंक्लूड करेंगे तो ये आपके पास एक कर्व हासिल होगी जिसको आप ये डिफरेंट पॉइंट्स जैसा कि पॉइंट P है, पॉइंट Q है और इसी तरह पॉइंट R, S और T, यानी ये वो तमाम वो पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी A, B, C, D पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके। हमने नोट किया था कि एट पॉइंट A देयर इज मैक्सिमम वोल्टेज ड्यू टू मैक्सिमम स्लोप। एट पॉइंट B ड्यू टू जीरो ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिड्यूसेस टू जीरो, जिसको यहाँ पॉइंट Q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। At point R there is maximum voltage but in reverse direction, नेगेटिव साइड पर है, और S पर फिर ग्रेडियंट जीरो हो जाता है because there is no change in y axis. So value of V at this point is 0, and at point T there is maximum voltage due to greater slope or greater gradient. जब आप इन दोनों वेव्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ एक वेव है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट जो आपको पर्पल कलर में रिप्रेजेंट की गई है, एंड इन ब्लू दैट इज अल्टरनेटिंग voltage. So by comparing both waveforms, we can observe that they are out phase, they are not in phase. दोनों में जो variations हैं, they have a phase difference equal to pi/2 or 90 degree. So this is phase difference between these two waves for alternating current and alternating voltage. यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि current is starting from 0 and increasing positively. Since current is starting from 0 and increasing positively, लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो करंट वाली वेव फॉर्म है दैट इज रेफरेंस। अब आप इसके लिहाज से वोल्टेज को यूं डिफाइन करेंगे कि हियर वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ pi/2, कि जो वोल्टेज है वो करंट को लीड किए हुए है, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो pi/2 या 90 डिग्री के बराबर है। और इसको आप यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाएंगे, करंट अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, जबकि जो वोल्टेज है दैट इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ pi/2. दिस इज pi/2 और 90 डिग्री एंगल between V and I, and this is representing the phase difference between V and I. So in case of inductor, voltage is leading the current, जबकि कैपेसिटर में हमने नोट किया था कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। आप इसी स्टेटमेंट को, ये जो इंडक्टर के लिए रिजल्ट हम हासिल कर रहे हैं, इसको इस अंदाज में भी पढ़ा जा सकता है कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज।
और इन अदर वर्ड्स वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। आप यूं भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से लीड किए हुए है या करंट वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड है। लेकिन कैपेसिटर में इसका रिवर्स था। कैपेसिटर में करंट वाज लीडिंग द वोल्टेज, current was leading the voltage, but in case of inductor current is lagging behind the voltage. So this is difference between the behavior of alternating current in these three basic components of AC circuit. In AC, through resistor, voltage and current, they were in phase. In case of capacitor, current was leading the voltage, but in case of inductor, current is lagging behind the voltage by a phase difference equal to pi by 2. So like other components, inductor also has resistance, and this resistance is called inductive reactance. The resistance offered by an inductor is called inductive reactance, and it is represented by XL. And this XL is equal to omega L, where omega can be replaced by 2 pi F. So this inductive reactance depends upon the frequency of AC source. If there is a greater frequency, then inductive reactance also becomes greater. But with less frequency of AC source, at low frequency of AC source, XL is also smaller. Inductive reactance can also be written as the ratio of RMS value of voltage to the RMS value of current, and its unit is ohm. So ये इसकी यूनिट होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की, ओहम, विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। लास्ट में हम पावर डिसिपेशन को डिस्कस करेंगे। पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टर वाज मैक्सिमम। अगर आप रेजिस्टर की बात करेंगे तो वहां पावर डिसिपेशन मैक्सिमम थी, और उसको मेजर करने के लिए आप फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ pure capacitive circuit or pure inductive circuit, power dissipation is always zero. यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एक ऐसा सर्किट जहां इंडक्टर यूज किया जा रहा है, तो ऐसे सर्किट में जो पावर डिसिपेशन होगी वो जीरो के बराबर होगी। बट इन केस ऑफ रेजिस्टर इट वाज मैक्सिमम। तो कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट हो, पावर डिसिपेशन जीरो होती है। हाउ इज इट इज जीरो? कैसे जीरो है, इसको प्रूव किया जा सकता है। सपोज अभी जैसे हमने इंडक्टर के केस को डिस्कस किया, और इंडक्टर में रिजल्ट ये फाइंड किया कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। लिहाजा करंट को हमें हॉरिजेंटल के अलोंग और वोल्टेज को वर्टिकल के अलोंग दिखाना है। कैपेसिटर में क्या था कि वोल्टेज हॉरिजेंटल के अलोंग थी और करंट वर्टिकल के अलोंग था। तो यहाँ आप दोनों में से कोई भी यूज करते हुए इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अभी इंडक्टर की बात करेंगे। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दे आर अरेंज्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, second, third, and fourth. We know that rightward all the values are taken as positive, leftward negative, upward all the values are positive, and downward all the values are negative. So in first quadrant, both V and I, they are positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, एंड वी नो दैट P is equal to product of V and I. So it is also positive. But in second quadrant, voltage is positive and current is negative. So after multiplying both values, power also becomes negative. So P की value भी negative होगी. In third quadrant, V and I, they are negative, but power is positive. And in fourth quadrant, I is positive, but V is negative. So power is negative. So in first and third quadrant, power is positive, whereas in second and fourth quadrant, power is negative. तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होगा, उसको अभी आप यहाँ पर नोट करेंगे। In first quadrant, since both V and I are positive, so we can say that power is also
positive, and positive means that power is supplied to inductor. यानी इस क्वाड्रेंट में जब V पॉजिटिव और I पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं और पावर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एसी सोर्स जिसको आप इस सर्किट का हिस्सा बनाए हुए हैं, वो इस दौरान उस इंडक्टर को पावर डिलीवर कर रहा होता है, पावर सप्लाई कर रहा होता है. बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट power is negative, P is negative. So we can say that now energy is provided by the inductor. यानी पहले क्वाड्रेंट के दौरान सोर्स ने इंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड की है और सेकेंड क्वाड्रेंट में द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर. अब ये इंडक्टर आगे एनर्जी डिलीवर कर रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पावर इज सप्लाइड टू इंडक्टर बिकॉज इट इज पॉजिटिव. But in fourth quadrant, since I is positive, V is negative, so power is also negative. Hence, energy is provided by the inductor again. तो इन चारों प्रोसेस में अगर आप इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो पावर डिसिपेशन 0 के बराबर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी पावर या एनर्जी ट्रांसफर की जाती है बाय द सोर्स टू द इंडक्टर, सेकंड क्वाड्रेंट में वो हासिल कर ली जाती है, थर्ड में फिर उसको प्रोवाइड करते हैं तो फोर्थ में वो वापस ले ली जाती है. तो इस तरीके से जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 0 के बराबर होगी, यानी जो पावर डिसिपेशन है वो 0 के बराबर होगी, यानी एनर्जी डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन 0 होती. तो जैसे अभी हम इंडक्टर के केस में प्रूफ कर रहे हैं, द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट. Hence, power dissipation in pure capacitive or pure inductive circuit is always 0. But in case of pure resistive circuit, power dissipation is always maximum. तो ये थे आपके basic 3 components of AC circuits: resistor, capacitor, and inductor. Thank you.